even in the first film also, we were not concerned about what is going to happen in the politics after the film. It happened. Right. We were not expecting that. We didn't know that कि this is going to happen. I should thank Exactly. you. Wow. So taking his name very perfectly. Oh my God. Because even Thank Maharashtrian you. girls are not able to speak Kshitish. Ah, They okay. always call him Kshitij. It is not Ah. Kshitij. So thank you so much for that. Wow, thank you प्रसाद दादा, thank you. जब स्ट्रगल खत्म होता है तब आर्टिस्ट भी खत्म होता है. ये मेरा मानना है. आर्टिस्ट अगर जिंदा रहना चाहता है तो स्ट्रगल भी जिंदा रहना चाहिए. मराठी ऑडियंस they are very enriched. They are starving for a good stuff. You know, they don't want to see a typical kind of a commercial films. No, they can watch it in Hindi. They have many options. Hello and welcome. You are watching India.com with Jigyasa Sahai. And आज हमारे साथ एक बहुत amazing star cast है of one of the highly anticipated films Dharamveer 2. Yes, today we have with us Prasad Oak and Kshitish Tate. Welcome. And thank you so much for having this conversation with us today. And first of all, a big congratulations. आपकी film, उसका trailer is out and people are absolutely loving it. I mean, मैं उसके comment sections देख रही थी and people are so excited and they are like very intrigued to know कि अब इसके आगे क्या. So congratulations for that first Thank of you all. so Thank much. you. Thank you. Thank you. this movie is a very powerful film. I mean, जिसके dialogues हैं and everything. So with the sequel coming in now, तो इस बार Dharamveer was like a blockbuster. So with this one, what kind of message or like what sort of reception are you expecting this time from the audience? See, this part is a more powerful part of the first film. Yes. And the character on which the film is based on धर्मवीर आनंद दिघे साहब, तो वो इतनी बड़ी हस्ती थी महाराष्ट्र की और इतना बड़ा काम है उनका कि वो एक पार्ट में खत्म होगा ही नहीं. बिल्कुल. तो शायद हमें एक और दो पार्ट करने पड़े शायद. तो फर्स्ट पार्ट में जैसे उनकी एस्टेब्लिशमेंट हम लोगों ने दिखाई थी कि हु वाज आनंद दिघे एंड वो कैसे उभर के आए और कैसे बाला साहब के साथ उनका रिश्ता था और कैसे वो शिवसेना में उनकी एंट्री हुई, ये सब दिखाया. तो आगे जाके हिंदुत्व का जो वारसा है वो दिघे साहब ने कैसे चलाया, ये इस फिल्म में देखने को मिलेगा. बिल्कुल. एंड आई थिंक इतने like even Bollywood में भी बहुत सारे actors. I just saw कि रणबीर कपूर, शिल्पा शेट्टी in a recent I think Ganesh Utsav maybe they were also rooting for it and requesting their fans and audience to come and watch this film. So how is it going for you, Kshitish? Is it like overwhelming, excited? How is the mood like? It's extremely exciting right now. Since the first part only, it is very exciting. First of all, this film is written and directed and conceived by Praveen Tarde, one of the most dynamic directors and writers in Marathi for a long time. So he has been getting stronger and stronger day by day. So this film again is as Prasad sir said, it's a very very dynamic and powerful film. Point being, ऐसे सियासत वाले बहुत मूवीज हम देखते आ रहे हैं, राइट फ्रॉम सामना सिंहासन जो मराठी क्लासिक फिल्म्स है टू हिंदी राजनीति जैसी हिंदी फिल्म हो, काफी फिल्म्स है ऐसी. बट दिस ऑल्सो रेफर्स टू वेरी करंट पॉलिटिक्स which is going on in India, predominantly in Maharashtra. So like I'm playing the part of the current Chief Minister of Maharashtra, Mr. Eknath Shinde. So of course that's not the focus point of the film. Focus point is always Dharmavir Anand Digheji. But the entire work system of Eknath Shinde is based on the narrative of Anand Digheji. है ना? So we are really into it right now, into the current state of politics in Maharashtra. So it's really exciting. It's encouraging at the same time. And we're getting to know a lot of things. And as he said, yes, Anand Dighe Saab was the very reason why all these people from Bollywood as well are giving, videos regarding watching the film. Mumbai and especially Thane has seen Anand Digheji like
God. God, Yeah, God है ना? figure, right. So they have seen him very closely. They have seen how system works, how quote unquote parallel system works. Whenever he was not in the governance position, what changes he did to the state. Everyone has been watching it for years, for decades, Like very closely. very you'd say, closely. yeah. So although it has been 22 years since Anand Dikhe ji passed away, his power, his presence still is felt in Thane. So it's really dynamic and exciting to be a part of this entire series, part 1, part 2. बिल्कुल एंड वो जो रिसेप्शन ऑलरेडी ट्रेलर को मिला है उससे भी ये पता चल रहा है कि इवन पीपल आर एब्सोल्युटली वेरी एक्साइटेड फॉर इट लाइक यू सेड कि एकदम लाइक क्लोजली पीपल हैव वॉच्ड इट जो एक्चुअल में रियलिटी में हुआ है सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी इट ऑन स्क्रीन एंड यू नो लाइक यू सेड कि कैसे ये जो ऑन गोइंग पॉलिटिक्स है अभी जो सब कुछ चल रहा है उसके काफ़ी क्लोज है सो यू नो विद द चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियोज इन महाराष्ट्र ऑल्सो has that affected the film या फिर आपको लगता है कि that will have an effect on the reception? To be very honest and very frank, we don't care about that. We make a good film. We make the film very honestly, very passionately, and with a lot of dedication. You know, so even in the first film also, we were not concerned about what is going to happen in the politics after the film. It happened. Right. We were not expecting that. We didn't know that कि this is going to happen. The same thing goes with the part 2 also. We don't know what is going to happen. We are making a honestly we are making a second part of the first film. That's it. Right. Absolutely. You know, so talking about the characters, इतने बड़े बड़े लोगों का character निभाना is not easy. It's very challenging. And first part में you have both of you have beautifully aced it. So kudos to that. So I'm sure कि जब हम ऐसे किसी का role निभाते हैं, like of somebody of stature of Mr. Eknath Shinde जी, so उनका you know चाल ढाल बोलने का तरीका ये सब as actors I'm sure बहुत investment लगती है you know to get that right. And I'm sure आपने first part में बहुत अच्छे से वो सब कुछ निभाया सो जब यू स्टार्टेड विद द सेकंड लाइक सेकंड पार्ट ऑफ इट तब व्हाट वर द एडिशनल चैलेंजेस or like did you spend उतना ही similar amount of time with Mr. Shinde या इस बार थोड़ा कम था how was it like this time? Frankly, I did not get to spend time with him. How much ever I wanted to do it, because Okay. he's the CM of Maharashtra. Exactly. Being the CM is a very, very busy man. Right, I mean, he cannot give time for an actor to, you know, give his process. कि हाँ ये भी कर सकते हो, इतना टाइम ही नहीं है उनके पास. Having said that, still, you know, I can say very positively though, कि this is definitely one of the most tiring, exhausting and challenging acting parts I've ever done. Very positively. आपने टीवी सीरीज फिल्म्स प्लेस सब कुछ किया है सो यू नो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आई थिंक एक जगह आपने एक बार बोला था कि हाउ यू वांटेड टू परस्यू डायरेक्शन एंड शायद आप धर्मवीर 1 के बाद आप चाहते थे कि थोड़ा फोकस उस पर भी रहे सो आपने इतना अच्छा काम किया है रिसेंटली आपकी आई थी ब्लैकआउट भी आई सो डू यू थिंक कि क्या पता आपकी कॉलिंग शायद एक्टिंग ही हो सकती है. I mean, you can't decide that, you know. This is a very unpredictable field. In a way, you know, कि आप चाहते कुछ हो आपको मिलता कुछ है. मतलब मैं पूना छोड़ के मुंबई आया डायरेक्टर बनने के लिए, बना एक्टर और मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पहला अवार्ड जो मिला वो एज अ सिंगर करके मिला. Wow. So that's the destiny, you know. Right. But जो है कि जो काम आ रहा है सामने से वो honestly करो, बस इतना मेंटेन करता आया मैं हमेशा. Right. And so I think you also mentioned how Dharamveer के बाद like it was like you got like a lead role. काफी films के बाद you finally had that moment and things changed drastically for you. So क्या उसके बाद क्या आप ये कह सकते हैं कि वो finally at ease कि ठीक है after so many years एक होता है ना कि I deserved it, that my due is done. वो एक शायद struggle कहीं ना कहीं खत्म होगा. Would you agree? नहीं, बिल्कुल नहीं. जब struggle खत्म होता है तब artist भी खत्म होता है. ये मेरा मानना है. आर्टिस्ट अगर जिंदा रहना चाहता है तो स्ट्रगल भी जिंदा रहना चाहिए. क्योंकि जिस दिन स्ट्रगल खत्म होगा आर्टिस्ट को ऐसे लगने लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं और उसी वक्त वो खत्म होता है. तो जो स्ट्रगल
आदमी को जिंदा रखता है, एक्टर को जिंदा रखता है कि एक ये आया, अभी धर्मवीर फर्स्ट आया, वो सुपर हिट हो गया, अभी धर्मवीर 2, सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रगल। आई एम वेटिंग कि यार ये फिल्म भी चले, इसको भी उतनी उतनी रिसीव जिस तरह से पहला पार्ट पहला वाला किया आया था, हाँ। उसी तरह इस पार्ट को भी रिसीव करे, उसी तरह मेरे काम को भी सराहना मिले। तो द स्ट्रगल गोज ऑन एंड इट शुड नॉट एंड, दैट्स व्हाट आई फील। Right. I think it's everyone's perception. I think this is also very right way to put it forth, I think. Yeah. You know, coming to you, Kshitish. So, आपने एक ये बहुत अच्छा किरदार निभाया एकनाथ शिंदे जी। Let me cut you. Yes. I should congratulate you and I should Exactly. thank you. So taking his name very perfectly. Oh my God. Because even Thank Maharashtrian you. girls are not able to speak Kshitish. They okay. always call him Kshitij. It is not Ah. Kshitish. So thank you so much for that. Wow, thank you Prasad Dada, Great. thank you. I'm glad I did not pronounce it incorrectly. क्योंकि मेरे हिसाब से नाम का सही प्रोनाउंसिएशन होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल। So जैसे आपने इतना अच्छा इसमें कैरेक्टर आपका है एंड आपने पहले भी आई थिंक लोकमान्य तिलक का भी अपने एक सीरीज में कैरेक्टर प्ले किया है। सो आप ऐसा जब ऐसा कभी रिफ्लेक्शन या आपको कभी ऐसा लगा कि यू हैव प्लेड सच गुड सीरियस कैरेक्टर्स, सो क्या पता कि ऑडियंस एक बॉक्स में मुझे एक पॉइंट के बाद देखने लगे एंड दैट माइट अफेक्ट द फ्यूचर रोल्स और फ्यूचर स्क्रिप्ट्स दैट माइट कम योर वे? Haven't really thought about it. I just, see, getting to choose a role is a big thing that you can really achieve. Mostly actors do not get to choose. Whatever comes their way, they do it mostly. Okay, unless at least until you reach a certain stature and prosperity, ki jab you can really choose. So it is a privilege to be getting to choose something. So I must honestly say ki I have just played the parts that have come my way, and I've been lucky enough to get really varied kind of roles and not a generic ones. Right? So yeah, and जो भी थोड़ी बहुत डिग्री है चूज करने की, तब मैं यही चूज करने की कोशिश करता हूँ कि यार अलग अलग रोल्स हो। मतलब लोकमान्य तिलक जी का कैरेक्टर करने के बाद ये कैरेक्टर हुआ, सो इट वाज लाइक अ ड्रास्टिक शिफ्ट, एंड दैट टाइम आई ऑफ कोर्स डिड नॉट केयर अबाउट हाउ विल ऑडियंस रिसीव इट। What am I getting through it? I'm getting really enriched, है ना? Because Lokmanya Tilak is such rich a biography. बिल्कुल। कितना उसमें डीप जाओ और सरफेस दिखता ही नहीं है, उतना डीप वो चरित्र है। तो वो करने में भी बहुत ज्यादा मजा आया। And of course, an actor always wants to look different in different roles, speak differently for different roles, perceive acting according to the medium. So the Lokmanya Tilak character that I played, it was for a television serial. It demands a different set of techniques as an actor. This is a film. और उसमें भी प्रवीण तरड़े जी की फिल्म. It demands some really, heroic kind of dynamic acting skills. So I've been lucky enough and I've never thought about it. I'll think about it, but not yet. That's great. I think openness रहे, so there's a free flow and then good things come your way. बहुत सारे filters लगा के भी I think हम काफी चीजें अपने लिए ही रोक देते हैं. So I think that's a very good, nice way to go about it, to be honest. So my next question is to the both of you. आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे रीजनल सिनेमा भी क्या अब सब कुछ पैन इंडिया धीरे धीरे बनता जा रहा है, लाइक साउथ, बंगाल, गुजराती फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स, एवरीथिंग, हर चीज़ आजकल पैन इंडिया जा रही है. सो एंड स्लोली आई थिंक मराठी फिल्म्स भी धीरे धीरे इस ओर बढ़ रही हैं. बट according to you, with your experience and everything, where do you think was the lag for Marathi films to come to the mainstream? Yeah, to wo audience ko receive hona on the main front. You would answer it better because I should tell you, you referred to it, and that's really great that you have read so much about us. And there's not much to read about me, but about him definitely. He and some actors of his generation have worked like monsters. Okay, they have like worked day and night sleeplessly. So he is the one who has actually seen the Marathi industry for decades. Yes. I will say this is 50-50. This is not the fact. See, when Dharmavir Part 1 came, it was released on
13th of May 22. 2022 हाँ Just before 15 days, हाँ Chandramukhi was released, which was directed by me. Okay, and just after 15 days, Hambir Rao was released, which was again directed by Praveen Tare, the same director writer, Right. and he was the actor also in that Hambir Rao. Okay, so all three films went very well, back to back. So it is there is no lack. See, you should give a so काय सकसला काय म्हणतात enriched film. okay Marathi audience, they are very enriched. They are starving for a good stuff. You know, they don't want to see a typical kind of a commercial films. No, they can watch it in Hindi. They have many options. But in Marathi, we have a very strong cultures. We have big novelists, writers, authors in Marathi. We have a very strong religion, tradition. tradition right So they want to see all this in a film, in a very decent way, you know. So they are not interested in tapori type of film in Marathi. There are some kind of people who also like to watch these kind of films, but परसेंटेज वाइज बात करें तो ज्यादा परसेंटेज मराठी ऑडियंस ऐसी फिल्में देखना चाहता है जो जिसमें ट्रेडिशन हो. मराठी ऑडियंस इज अ ड्रामा लविंग ऑडियंस बेसिकली. नाटक जो रहता है, नाटक प्ले, right उसके ऊपर ज्यादा प्यार है मराठी लोगों का. हाँ तो वैसा कंटेंट, वैसा रिचनेस जब उनको फिल्मों में मिलता है तो वो देखते ही देखते हैं. right या फिर सैराट जैसी इंटेंस लव स्टोरी हो, क्योंकि वैसी फिल्म सालों में आई ही नहीं, सालों बाद आई तो वो चली. right तो बहुत सालों के बाद हिरकरी, जो मैंने फिल्म बनाई हिरकरी, एक माँ की स्टोरी है वो, जो बच्चे के लिए एक रात में पूरा फोर्ट उतर के आई. तो जो वो तो पाठशाला में वो लेसन है, हाँ तो उसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई. right तो the वो सुपर हिट है. folklores and Yeah. this type सो लैक है नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स शुड थिंक कि व्हाट शुड वी डू टू रीगेन दैट, यू नो. सबकी अपनी अपनी ऑडियंस, अपना कंटेंट के हिसाब से पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट. सो विद दैट नोट, थैंक यू. एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? यू सेइंग समथिंग? No. Just remembered of something. Yeah. Ki also, you know, on a larger note, but India is a country where there is a huge amount of diversity. Yeah. है ना? And also the society is going through a lot of turbulence right now. Right. In the digitalization, globalization. बिल्कुल. कि वो जो पहले जो borders थी वो अभी रही नहीं है. For betterment, I believe. So crowds and पहले जो audiences का segregation था, ऐसा मुझे लगता है, being a student of film as well, कि पहले टारगेट ऑडियंस करके कुछ डिस्क्राइब कर पाते थे हम, है ना. अभी विद द इमर्जेंस ऑफ ओटीटीज, वेस्टर्न कंटेंट सो मच, वो इंटेंडेड व्यूअर्स अभी सेग्रीगेटेड रहे नहीं अभी, ऐसा मुझे लगता है. सो फिल्म मेकर्स आर ऑल्सो एडेप्टिंग कि सर्वव्यापी काम किस तरीके से किया जाए, है ना. Yeah. So, and adding to the question, Yeah. कि pan India का जो वो, I missed the point. Right. See what happened in the situation of COVID. वो 2 साल में लोगों ने इतना अलग अलग कंटेंट देखा हाथ में, हाँ विथ सबटाइटल्स. right सो उस वक्त ये बाधा आई नहीं कि ये फिल्म कोरियन है, या ये फिल्म जापानीज है, या ये फिल्म तेलुगु है, या कन्नड़ है, या तुलु है, मलयालम है, व्हाटएवर, क्योंकि सबटाइटल्स थे नीचे. तो उन 2-3 सालों में ऑडियंस की विजन वाइड हो गई और वो हर तरह की फिल्में, हर तरह का Acceptance और वो कंटेंट सब देखने लगे, एक्सेप्ट करने लगे. और उसकी वो वजह होगी, ऐसे मुझे लगता है कि हर कोई पैन इंडिया, क्योंकि अभी सबटाइटल्स का साथ मिल रहा है सबको, तो लैंग्वेज का बैरियर है नहीं, तो क्यों ना पैन इंडिया करे. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू. I think you both of you have very nicely put all the perspectives. सारे perspectives एक साथ आपने बताया बहुत अच्छे से. So thank you so much. It was a lovely conversation. And anything at the end you would like to say for the audience, for your fans in Marathi about watching the film? Anything?
27 सप्टेंबरला धर्मवीर भाग 2 साहेबांच्या हिंदुत्वाची गोष्ट संपूर्ण जगभरात प्रदर्शित होतोय और इस बार सिर्फ मराठी नहीं हिंदी में भी प्रदर्शित हो रही है ये फिल्म. तो अपने नजदीकी सिनेमागृह में जाके जरूर देखिएगा. नक्की बघा आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहात. धर्मवीर भाग 2 साहेबांच्या हिंदुत्वाची गोष्ट. Right. धर्मवीर 1 जर तुम्ही पाहिला नसेल, इफ यू हॅवंट वॉच धर्मवीर पार्ट 1, go and watch it on the OTT Z5, and you still don't need to watch it to watch the part 2. Right. So it's your choice whether to watch it or not. But I'm sure if you watch part 2 earlier, you'll go and watch the part 1. It's that dynamic. It is a much stronger, much entertaining a film, part 2 of Dharmavir. And we are really, really hard excited to See the result. see the result. Yeah. Great. Thank you so much. Thank you so much for watching and book your tickets for 27th of September. Thank you.